Hello and welcome. Sahil, how are you today? Good, Kubeir. How are you? Good man. Finally we are able to do this, right? किसने Yes. सोचा था यार? Anyways, for the viewers first, everybody welcome. This is Sahil. I'm Kubeir. I'm sure you already know Sahil. Sahil, you know me, right? Yes, I do, as always. Okay. Good friends. So just to give everybody a bit of an understanding, a bit of a background. So Sahil or मैं, first of all, this episode and all um, the future episodes, hopefully, uh, will. So first of all, let's start. This is the episode one of our Canadian immigration, Canadian life, and everything to do with it. Uska pehla episode hai. This is our first podcast. Wow. Sahil and I have been dillying and dallying about this for a very long time. हमने सोचा ये करेंगे नहीं हो रहा था और हाँ, आज finally I think about एक घंटा पहले इसे yeah. करते हैं We are और less अभी than around. करते हैं. And it was like such a impromptu thing कि we don't even have a subject in mind, but I guess you all know कि subject होने की जरूरत नहीं है खासकर हमें. So first things first, this and all the future episodes, I don't think we're going to do it in purely English. This is going to be mainly Hinglish. हम लोग कभी Hindi भी only. हिंदी में कुछ करते नहीं हैं, and we Yes. had decided that whenever we do it, it's going to be a mix of both. So I know there is a lot of audience out there who primarily is non-Hindi speakers. So I apologize on both of us behalf. I apologize to you guys if there is uh, a bit of these discussions which you may not understand because you don't understand We'll, Hindi. But we'll try to otherwise, read them captions. हाँ जी बिल्कुल. Sahil, बताइए. my name is Kubeir. His name is Sahil. Sahil, हम लोग क्यों कर रहे हैं ये बताओ यार. See, कनाडा इमिग्रेशन जैसे सारे ही जानते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कभी मार्क मिलर साहब की तरफ से कुछ आता है, कभी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कुछ आता है ना. अभी ऑफ लेटली हमारे मिनिस्ट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स से बहुत कुछ आ रहा है. तो everybody is very tensed, everybody is very excited, even are we, tensed, excited. So I think this is the right time. लोगों के बड़े सारे सवाल होंगे, लोगों के बड़े सारे थॉट्स हैं. तो आज का एपिसोड जैसा हमने पहले सोचा कि we'll keep it very light. We'll try to feed off the answer the comments, and we'll see how it goes from there. तो फिर मोस्ट रीसेंट जो फियास्को चल रहा है उसी के बारे में बात करते हैं. आई वुड लाइक अस नॉट टू टेक be on this side or that side or include any political aspects of this क्योंकि at least मुझे politics के बारे में कोई खास वो नहीं है. मेरे को भी मेरी नहीं. information is only related to what we read on the media. And of course, since we all know कि मीडिया जो है हमेशा बायस होती है, I don't think there is any genuine media out there. तो इसके लिए मतलब हमारे व्यूज भी बायस्ड होंगे और इसीलिए हम अपने व्यूज किसी और पे नहीं थोपना चाहेंगे. With that, let's only talk about immigration. साहिल, कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला. I mean, at least a lot of people have been asking कि FSW के ड्रॉस पे फर्क पड़ेगा, प्रोसेसिंग पे फर्क पड़ेगा, एप्लीकेशंस के. तुम्हारा को क्या लगता है? देखो, जहाँ तक रही बात, मतलब टू साइड्स ऑफ द कॉइन. फर्स्ट इज इनसाइड कनाडा, जैसे जो भी प्रोसेसिंग है, एफएसडब्ल्यू ड्रॉज एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक उस पर कुछ भी इम्पैक्ट आना चाहिए. बट क्योंकि इंडियन मतलब कनाडा जो हाई कमीशन है इन इंडिया, अगर उस पर कुछ लोड बेयरिंग का कुछ होता है, दैट आई एम एक्सपेक्टिंग के मे बी सम डिलेज देयर. क्योंकि लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर कुबेर, जब सितंबर 2023 में दे हैड विथड्रॉन their people, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लाइक canada.ca पे they had put up a disclaimer कि we don't have enough staff out there in India because of the ongoing tensions and their delays. So I'm expecting कि same कुछ एक repeat in terms of passport stampings and all of that. Maybe कुछ load bearing करनी पड़ेगी इनको for some time at least. कुछ हो सकता है only in the India office. बट जहां तक लोगों का सवाल है कि भाई हमारे ड्रॉस का क्या होने वाला है, हमारे एप्लीकेशंस की हैंडलिंग, तो आई उस पे तो डेफिनेटली कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला. लास्ट टाइम भी नहीं पड़ा था, अभी नहीं पड़ेगा. द ओनली इम्पैक्ट जो हमें लग रहा है दैट विल हैव टू बी इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेसिंग टाइमलाइंस. एज ऑफ राइट नाउ किसी भी तरह की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कुछ भी चीज रोकी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल को रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं रुक रहा है कि भाई Travel ट्रैवल्स तो रुक I जाए. think it's too far from travel bans. उससे तो बहुत करेक्ट. बट जिस तरह से डिप्लोमेट्स एक्सपेल किए जा रहे हैं एक दूसरे की कंट्रीज में से, उस तरह की भी सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है. मतलब ये हालात भी ऐसे कभी इतने खराब नहीं हुए. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, ड्रॉस चलते रहेंगे. अगेन
ये जो रिलेशनशिप है उस इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप अपने एप्लीकेशन कंप्लीट करिए, सबमिट करिए। आई थिंक जो कनेडियन जो इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं इन कनाडा, उनके प्रोसेसिंग पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है? आई थिंक उसमें डेफिनेटली जो पीसीसी इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कैन इंडिया पीसीसी इशू करता है, पुलिस क्लियरेंस देता है, एंड कनाडा उसको यूटिलाइज करता है अपनी एप्लीकेशंस में। उसको मुझे थोड़ा सा डाउट है कि दैट द पीसीसीज एंड ओसीआईज एंड ई वीजाज may get impacted for a short while, if not immediate. It can only be a momentary short, है ना, वो जैसे थोड़ा सा pile up हो जाता है, it can cause a bit of a delay, but कोई इतना ज़्यादा intense नहीं है. However, if you remember, last year Canada, I guess last year Canada had a similar fight with Saudi also. जब उन्होंने they had oil exports and all of that ban कर दिए थे. अभी I think we are way too far away from any such adverse implications. Um, but I think BLS for now, people who are anticipating draws, उन लोगों को अपने PCC इशू अभी से कराने शुरू कर देनी चाहिए. That's one thing बिल्कुल, that I बिल्कुल। really आई मीन पीसीसी कंसिडरिंग कि नॉर्मली भी ऑलमोस्ट 2 महीने वैसे भी लगते हैं, अबाउट yes 8 it वीक्स। अब डिपेंडिंग ऑन कि काउंसलर स्टाफ की क्या कंडीशंस हैं एज़ फार एज़ इंडियन एम्बेसी इज़ कंसर्न्ड, तो उसके हिसाब से अभी तक तो सिर्फ 6 डिप्लोमैट्स की बात हुई है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि भई और दूसरा कोई काउंसलर स्टाफ में कुछ फ़र्क पड़ा होगा। correct. बट आने वाले टाइम में वी डू नॉट नो, दोनों कंट्रीज़ आर प्रोबेबली गोइंग टू हैव अ बिट मोर tussle as we move forward. What about the visa processing in India? In the sense कि अगर आप जब अपने पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, पासपोर्ट्स भेज रहे हैं वीजा प्रोसेसिंग के लिए, तो उस पे भी तो डिले हो सकती है ना? बिल्कुल। I don't know. I'm not sure. मेरे clients में there is a mix of response that we've had so far. For the PR visas that are being issued, उसमें थोड़ा सा टाइम आ रहा है, उसको थोड़ा सा डिलेड चल रहा है. बट जो टेम्पररी वीजाज की स्टैंपिंग है, दैट हैव बीन वेरी वेरी क्विक, लाइक विद इन अ वीक. दैट इज सरप्राइजिंग, राइट? आई मीन हमारे पास भी कुछ कुछ जो टेम्पररी वीजास जो प्रोसेस में आए हैं, वी हैव सीन डिसीजंस इन एज शॉर्ट एज 10 डेज। और यस, मजे की 10 बात ये 14. है कि जो वेबसाइट कैनेडियन इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, canada.ca वेबसाइट है, वो कह रहा है कि करंट टाइमलाइंस के हिसाब से, मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, विजिट वीजा बोल रहा है 112 दिन फ्रॉम इंडिया, यस. हाँ, वर्क परमिट्स बोल रहा है 28 वीक्स, हाँ, दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, हाँ, सुपर वीजा बोल रहा है 99 डेज, स्टडी परमिट्स बोल रहा है 6 वीक्स। हाँ, सो दैट इज द प्रोसेसिंग टाइम जो कि कैनेडियन वेबसाइट दिखा रही है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इफ यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ दीज, और इफ यू हैव अ विजिट टू कनाडा कमिंग अप, तो कर, मे बी प्लीज अप्लाई, थोड़ा जल्दी करके अप्लाई करें, वेट मत करें। हाँ. इसके अलावा और क्या हो रहा है? इसके अलावा आई थिंक लोग इमिग्रेशन लेवल्स प्लान की तैयारी कर रहे हैं विद इन. 1 नवंबर हम लोगों ने इसी बारे में पहले भी बात करी थी कि ये जो यस, 1 नवंबर की डेट है, कभी कभी ना अभी एवरीथिंग इज बीइंग टारगेटेड टुवर्ड्स 1 नवंबर, कि वो या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के सारे चेंजेस जो है वो 1 नवंबर से शुरू वो भी होंगे, फर्स्ट नवंबर आएगा. इमिग्रेशन लेवल्स प्लान 1 नवंबर से आएंगे। तुम्हें कितना हाँ. लगता है कि कितना कितना कट करेंगे ये? हाउ अबाउट 10% तुम बड़े और मोर. ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब यू आर वेरी आई मीन, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी टैगलाइन चुरा ली है, फॉरएवर होपफुल, मतलब क्योंकि ये तो मतलब वही लोग कह सकते हैं फॉरएवर जिनका होपफुल. क्योंकि I'm a bit more pessimist about this. I have a feeling कि this is going to be in the range of about 15%, even more than 15%. We are probably going to go, जो कि पहले हर साल बढ़ते जा रहे थे 10 से 12%, वो अब you're going to go back towards that. So I'm looking at about 440, 450 kind of a number for next year. सी इंटरेस्टिंगली उन्होंने ऑलरेडी अभी तक का सितंबर तक का जो स्टडी परमिट का इशुएंस है ना, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 125 के एप्लीकेशंस. अगर आप सिर्फ उसी को देख लो एंड नेक्स्ट ईयर एंटिसिपेट कर रहे हैं 300 के लेस पीजीडब्ल्यूपीस, तो आप मतलब आई थिंक यस 15% वोंट बी अ सरप्राइज. मतलब जिस हिसाब से कनेडियन पॉपुलेशन को खुश करने की कोशिश करी जा रही है, आई थिंक क्वाइट पॉसिबल इट कैन गो हायर देन 15% ऑल्सो. 10 to 15 तो है ही है, मतलब 10% 15% तो है ही है. अब जब ये 10 to 15% होगा, ये मैंने आई थिंक मेरे लास्ट वीकली राउंड अप में भी यही कहा था कि जब 10-15% होगा, मेजॉरिटी ऑफ दोस कट्स इज प्रोबेबली गोइंग टू कम फ्रॉम इकोनॉमिक पाथवेज. पाथवेज ऑलवेज सबसे पहले यही ब्रांट आता है.
और एंड जब मेरे को इकोनॉमिक ऐसा लग बात रहा है, है कि हाँ, जनरल ड्रॉस तो आई थिंक जनरल ड्रॉस पे हिट्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि पीएनपीज़ तो कोटास नहीं छोड़ेंगे। लाइक पीएनपीज़ तो नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। नहीं पीएनपी को नहीं जानने देंगे, पर जनरल ड्रॉ हो कहाँ रहे हैं? मतलब मई के बाद तो गायब ही हो गए जनरल ड्रॉ। अब तो जनरल इज़ द न्यू सीसी, मतलब और मे बी सीईसी इज़ द न्यू जनरल सॉर्ट ऑफ, क्योंकि 539 पे तो चल ही रहा है। सो बिल्कुल। तो तो सॉर्ट ऑफ। आज आज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मेरे को कहीं से मिला था। अगेन वो भी एटिप नोट्स हैं और पूरी तरह से रेडैक्टेड है। लेट मी सी ओके, इफ आई कैन पुल दैट अप एंड पुट इट ऑन द स्क्रीन हियर सो दैट एवरीबॉडी कैन सी इट। इसमें ये है कि थोड़ा ड्रॉस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई थी, ओके, which is with regards to कि भाई I'm just trying to download the document कि भाई कितने जो पहली बात तो ड्रॉस कब हो रहे हैं, और ये जो ड्रॉज कब हो रहे हैं उसके अलावा कि कौन से दिन कौन सा ड्रॉ होगा। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ इट इज रेडैक्टेड, व्हिच मेरे को तो बेसिकली ये मींस बताओ कि आप, कि अगला स्टेम ड्रॉ कब होगा? अरे सर ये स्ट्रेम ड्रॉ अगर पता चल जाता ना, विश्वास करो, इट इज बेटर टू गो एंड मेक मनी इन कसिनो, इन वेगस कसिनो विद, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज कि भाई अगर आपको प्रोनोमिने जो भी है, अगर आपको इस तरह की अगर ये साइट्स इनसाइट्स आने लग गई ना कि भाई क्या होने वाला है, तो वी कैन मेक लॉट ऑफ मनी, राइट? आई मीन Yeah, I think some inside sources to हाँ, IRCC will be. ये रही, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एक डॉक्यूमेंट। ये मेरे साथ सुबह कल रात को किसी ने शेयर किया था। ये भी एटिप नोट्स में से है। पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा नोट्स उन्होंने ऑब्वियसली शेयर नहीं किया, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। और इसमें भी अगर आप तो देखोगे, जो ये द लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है वीक ऑफ, तो ये जो वीक ऑफ के मतलब इनका ऑब्वियसली पूरा साल की एंड तक प्लान्ड है ड्रॉज। Obviously, as you can see, कि it started with general draws, FHS, Federal High Skilled के, और उसके बाद फिर CEC ओनली राउंड शुरू हो गए मई से। तो I think बीच अब में मिस प्रॉब्लम, किया ना इसमें कुछ? हाँ, We missed one draw out of the schedule, right? नहीं नहीं तो इसमें September October वाला। तो ये जो दिख रहा है ना आपको जो स्क्रीन पे, ये तो पूरा ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब दे हैव रेडैक्टेड मोस्ट ऑफ इट, तो हाँ, जून नहीं के बट बाद तो जो कुछ ड्रॉ है इंफॉर्मेशन है लेफ्ट ही नहीं। साइड में। अच्छा, ओके। तो ये तो ऑब्वियसली प्रायर प्लानिंग के साथ जो ड्रॉ हुए थे तब की ये इंफॉर्मेशन है। तो वी हैव नेवर गॉट टू नो एग्जैक्ट, क्योंकि जो जो मीट है इस इंफॉर्मेशन का, इस डॉक्यूमेंट में जो मीट है, वो तो व्हाइट व्हाइट जो रिडैक्ट किया हुआ है वही उसके नीचे है। वो तो हमें पता हाँ, ही नहीं कि मतलब क्या प्लानिंग थी और क्या हो रहा था। हाँ, बट बट अगेन दिस डज गिव एन इंडिकेशन कि हाँ, उनके प्लान तो रेगुलर ड्रॉस के ही थे। इफ यू सी कि बाय ईच bi-weekly 1st July, 15 July, 29 July, 12th August, 26th August, 9 September, 23rd September, 7th October, 20, so ये इनका प्लान तो bi-weekly ड्रॉस का ही है या था। हाँ, बट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर, आई डू नॉट नो व्हाट, कि क्या हो हाँ, जाता है कि ये जो ड्रॉ के गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। बट हाँ। as far as this particular document, again this has been received through the ATIP notes, तो बट देन बट देन इसमें से इफ यू सी जो 21 सितंबर वाला प्लान ड्रॉ है, दैट नेवर हैपेंड। वी हैड वन ऑन 19th एंड देन वी नहीं, हैड वन। दिस इज नॉट द डेट ऑफ 21 सितंबर, दिस इज द ओह दैट्स अ वीक ऑफ। वीक। हाँ, ओके। बट अगेन मैं वही तो कहने की कोशिश कर रहा था कि इनका ओरिजिनल प्लान तो यही था कि बाई वीकली ड्रॉ किए जाएं। अब वो एंड यू ओरिजिनल, रिमेंबर हम लोग वहाँ पे मिले थे, आईआरसीसी डायरेक्टर, द द सीनियर डायरेक्टर whom we met, he also said that we plan to do regular bi-weekly draws, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, but that never बट happened. Like, पर ये with क्यों me नहीं not, करते वो, उसका राज किसको पता है? उसका राज मुझे तो ऐसा लगता है दे आर ट्राइंग टू कीप इट, मतलब जो स्कोर्स है ना, जैसे ही इनको लगता है कि पूल में कैंडिडेट्स अबव अ सर्टेन स्कोर ड्रॉप कर रहे हैं, दे वेट सो दैट द फॉलोइंग वीक मोर पीपल कैन गेट एडेड एंड दे कैन कीप अप द ड्रॉस। लाइक इफ यू रिमेंबर बट 539 वाज absurd, लाइक इस बारी 539 तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों ही था। नहीं, ये 500 का ड्रॉ कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब व्हाई डू अ ड्रॉ 500 एट ऑल, मत करो ही मत ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये 500 का ड्रॉ करके क्या मिलेगा तुम्हारे को? Hence the general draw. ऐसे तो तुम्हें लगता है जनरल ड्रॉ होगा? See, here is when I become forever hopeful again. So I want it to happen. At least एक तो हो जाए, क्योंकि जो बेचारे इंडिया से डबल ओ नॉकआउट्स वाले लोग बैठे हुए हैं, जो लोग
यहाँ से कुछ बिजनेसमैन जो इंडिया गए हुए हैं ना, ऑल ऑफ दोज पीपल। ओनर हाँ, ऑपरेटर्स भी ओनर हैं। ऑपरेटर आईसीटी पे काफी सारे लोग जो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर C10 C11 C12 करा के आए हैं। जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं, डिस्पाइट हैविंग 1 ईयर सी ट्रैवल करते रहते हैं, उन लोगों के लिए आई वांट इट टू हैपन। आई एम अज्यूमिंग एक तो होगा, चल चाहे छोटा हो, एंड एक स्टेम ड्रॉ मैं चाहता हूँ। आई मीन लाइक, अगेन वी डोंट हैव एनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, बट आई एम अज्यूमिंग वन शुड हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सिर्फ एक स्टेम ड्रॉ से तो नहीं होगा ना। आई मीन आई वाज तो एक्चुअली होपिंग कि हर कैटेगरी में एक ड्रॉ तो एक, एटलीस्ट नाउ दैट वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, हाँ, we would like to we see would at want least more. one draw Correct. for each of the categories, correct? हाँ, हाँ, हाँ। वी शुड बी सीइंग। इस साल ट्रेड के इतने नहीं हुए, मैं बड़ा हैरान हूँ। सिर्फ एक, मतलब वी स्टिल हैव कोटा लेफ्ट फॉर ट्रेड, राइट? हमारे We पास, do. मतलब एज पर द एंटिसिपेटेड, वो तो वी हैव ट्रेड का लेफ्ट ओवर, वी हैव ट्रांसपोर्ट आल्सो लेफ्ट ओवर। उसमें भी कुछ कुछ आना चाहिए, एंड स्टेम का भी वी डोंट हैव इट। ऑल्दो इंटरनली इन्होंने कभी भी सीसी को कोई कोटा नहीं दिया था, इफ यू रिमेंबर, एज अ कैटेगरी। करेक्ट, करेक्ट। और सीईसी कभी था ही नहीं। स्टार्टिंग में जो कभी हमने था एटेक ही नहीं। नोट्स भी देखे थे उसमें सीईसी तो था ही नहीं। हाँ, कभी भी नहीं था। सो अज्यूमिंग वो आ गया है, आई थिंक दे हैव नाउ एलोकेटेड डायनामिक quotas to maybe CEC, maybe they're chewing out of trade and transport, जिसकी actual information नहीं आई है। So, अच्छा, interestingly, when do you think the next year's categories will be announced? Okay, so next tier categories, I don't expect any change. Hmm. And I don't expect any change for the very big reason कि I'm not sure if you have seen the document एक था, which yeah, you had shared. which is talking about the occupational projections for until 2031. And Okay. in those also, most of the occupations which are considered to be in demand for a long time, तो जो long shortage जो दिखाई गई है in demand की, वो भी it's all related to construction, healthcare, trade. STEM मैंने नहीं देखा उसमें, So, but these categories I have seen all of them. So I hmm. honestly don't anticipate any changes in categories even as we go into the next year. Hmm. अच्छा, I एक, think we'll continue with this. आई वांटेड टू पिक योर ब्रेन ऑन वन टॉपिक जो बहुत ही, आई एम श्योर आपने फोकस तो किया ही होगा ऑलरेडी। जब पीछे अभी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का अनाउंसमेंट कर रहे थे मार्क मिलर, उस टाइम पे ही सेड वी आर लिमिटिंग, लेटर दिस ईयर वी आर गोइंग टू लिमिट SOWP, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, टू spouses of highly skilled workers. But then interestingly he only said people like scientists and professions like lawyers Yeah, and C doctors. executives. Yes, absolutely. C अगर level वहां से executives. स्टेम निकल गया, तो हाउ बिग ऑफ अ ह्यू एंड क्राई विल दैट बी? So first of all, hue and cry करके तो कोई होने वाला कुछ तो है ही नहीं। हाँ, अनदर। obviously then we are almost going the US way, almost. Okay, मतलब वहां पे भी H4 visas या जो मतलब H1Bs के जो spouses हैं उनकी जो limitations हैं to get the spouse work permits, we are pretty much heading in the same direction. But not only that, now Mark Miller said that the restrictions on the spouse open work permits will be coming sometimes later this year. अब वो यस, later this year, there was no indication as to when, which basically means now that that announcement has been made, that can come into effect at any point of time and it will be effective immediately. तो यस। कहने का मतलब यह है कि if you are a person who's looking to apply for a spouse open work permit, you should not wait at all. You should be making your application at the earliest, क्योंकि अगर वो रूल या वो लॉ आ गया या जब भी वो whenever it is implemented, it will be with immediate effect. इमीडिएट और इफेक्ट, देयर विल बी नो उसमें नो वेयरिंग। और हाँ, so this is now I do not know how it will be implemented. I mean, क्या वो specific knock codes specify करने वाले हैं? Because आई अगर आप कहते हो कि C level executives तो वो तो समझ में आता है. Again, you will go to tier category 0 और उसपे 00 भी डबल जीरो classify कर सकते हो. आ जाएगा, But या। by and large, when you say specific occupations, then क्योंकि how are you हाईली going to? स्किल्ड तो स्टेम भी है, इफ यू लुक एट द एनओसी कोड्स, हाईली स्किल्ड कैटेगरी में तो स्टेम भी आ जाता है। बट देन बिल्कुल आता है. विदिन हाईली स्किल्ड, सो ही सेड हाईली स्किल्ड C level executives, doctors, lawyers. But I'm surprised he did go ahead and say scientists also, but he didn't say IT people or people in senior. And then अगर उसने professionals बोलना ही था, या फिर अगर executives or highly skilled employed मतलब, why did he mention C level specifically? That means he's trying to create some sort of a gap where regular people may not be eligible to apply.
देखो, I'm not sure if you remember, January of 2023 में this announcement came कि जो post graduate work permit holders हैं, या rather any open work permit holders, whether you are tier category 0, 1, 2, 3, 4, 5, everybody was eligible to have their spouses join them. ठीक है? Yes. उससे पहले टियर कैटेगरी 0, 1, 2, 3 के जो स्पाउसेस थे सिर्फ वही आ सकते थे, 4 और 5 एलिजिबल नहीं थे फॉर Yeah. स्पाउस ओपन वर्क परमिट्स। तो वो C41. जनवरी 2023 में वो अनाउंसमेंट हुई। We obviously will probably go back towards that, but I think it will be more stringent than just restricting to tier 0, 1, 2, 3. I think not only will it be restricted to certain tier codes, but there might also be additional knock codes that would have restrictions कि अगर आपके पास इस तरह का work experience है, or even if you're working in this kind of a job, only then will you be eligible for spouse open work permit. Yes, and this is going to have a severe impact on the future applicants because, see, at the Absolutely. end of the day, with all of these restrictions on TRVs coming in and these spousal open work permits, future may, I think it will have a major impact on people inside Canada. Like CEC candidates का जो count है over the course of the next 2 or 3 years, this will start falling down. That somebody interestingly pointed out कि don't you think if CEC start getting lowered, what happens to general draws being at a lower cutoff once again Hmm. in the But do you future? expect CEC draws to drop? कितना expect कर रहे हो? अभी forever hopeful को side पे रखो और ये बताओ, realistically बताओ कि what do you think CEC draw कितने तक जा सकते हैं? कितने score तक गिरेंगे? Looking at the pool and looking at the number of people who've been there, I think below 510 is a reasonable expectation. 505 to 510 is a This year? reasonable. Yeah, this year I hope. भाई this year में तो कुछ ज्यादा है ही नहीं. Let's see this again. ये तो कह रहा है कि अब हम already जो We हैं have about 6 more 16. draws, right? This year. हाँ, तो ये बोल रहा है week of 21st of October में draw बता रहा है. हाँ, so फिर बोल first रहा है week of 5 more. fourth, so roughly 5 more draws we are 5 expecting. अब more. वो 5 more draws they have to issue significant number of invitations for Yeah, this to sort of have any kind of impact, correct? yeah. They will be. What do you think? How much should be the next CC draw that happens? If so, a regular size happens. Let's assume a regular size because expecting 500 people, फिर तो it'll be totally off the. No, I mean, if they're going to do just 500, first of all, which never ever made sense to me, that why did they do this 500 kind of a draw? I mean, it just did not make any sense. Yeah. I expect another 4,000-ish kind of a draw, to be very honest. But Yeah. I don't expect scores to drop. So, of course, it will drop below 539. That it's not going to hold that number. Yeah. But I don't expect scores to go to 505 for sure, at least not in this year. I mean, unless, of course, there is always that chance that IRCC may do something drastic, which we all want them to. I mean, but I'm not sure if they can, because at the end of the day, the number of invitations they can issue is also limited. I think the number of ITAs that they do have remaining probably are in the range of about 20,000 something left. 20,000 people. There are about 88,000 invitations already issued. I don't remember the exact number. And I anticipate roughly 108 to 110,000 of invitations for this year. So if they have about 20,000, अगर 20,000 invitation उनके पास हैं, then and you have about 5 more draws to go. In those 5 more draws, they will certainly have, of course, PNP draws are there. PNP so 4,000 weekly. They might push another francophone draw again. I mean, how many francophones have we had this year? I somehow did not get a chance on that. Let me see. We've had I think about 10 or 8, something of that number. And surprisingly, see कितने कम लोग expected थे इस साल. So we were about 795, है ना? So 11. So looking about 20, we are touching almost 18 to 20,000 this year. अभी तो हो चुके हैं. For francophone, right? For French, yes. For French, we've already had more than 20,000. So we were 20,000 is a lot of draws, to be very honest. And I guess 5,000 planned, 3 to 4%. Yeah, so they had a number of, if you see the immigration levels target
for the last year, they had about 24 or 26,000 planned people, Yeah. not Yeah. invitations. So a lot of people mix up the ITAs with the number of people kind of a thing. So Correct. if it was number of people with 26,000 people, you would expect about 20,000 ITAs. So I think Correct. they're pretty much there. They're already there as far as francophone is concerned. So you might have maybe शायद एक draw करें थोड़े Right. बहुत, you might have like a thousand, like what they have been doing, 1,500 kind of a draw. But Correct. ये जो बाकी के जो 5 draws का schedule है as per Hmm. that notes, and I hope they stick with it, कम से कम category draws. So हो सकता है कि एक ही हफ्ते के अंदर you might see a couple of categories, for example STEM and healthcare, transport and Hmm. agriculture, that kind of a thing. Technically, they can wrap up 1 week somewhere around 5 to 7,000 people. अगर एक week छोटा भी गया, maybe end of this year, then we should be able to see. Uh, you know, uh, Sorry, I think you lost me. I lost you, yeah. तुम गायब हो गए हो, मिस्टर इंडिया बन गए हो तुम. No, I think there's some issue. Let me just. Can I? You can hear me on the audio, right? I can hear you on the audio. तो जब तक आप अपना कैमरा ठीक कर रहे हो तब तक I will just continue with what we are talking about as far as the draws are concerned. So yes, draws anticipation is quite high, and we, as I just showed you the document, we are expecting about approximately five draws. Again, I'm not sure how reliable that ATIP sheet is, because we have seen in the past when we have got the ATIP notes earlier, the percentages of draws for each category, I don't think they stuck around and did anything with those. So therefore, now that we know that there are approximately five more draws remaining for this year. So when I'm saying five more, I don't mean that there would be to count PNP and to count CEC separately. It's about 5 rounds of, or 5 sessions of draw. So they've given an approximate of the week during which the draws will happen. So you could have a PNP, CEC, or a PNP in a category, or a couple of category draws within the same week, and that would count as one for that particular week. So that's what we are expecting as far as the draws is concerned. Other than that, again, just to reiterate, if you are making an application for spouse open work permit, please do not wait. This is going to be really, really important to get this thing out and submitted at the earliest. With regards to, okay, let's see some of the questions. Now, there was a question about Tier 4 category. Will there be any upcoming immigration pathways or specific programs for Tier 4 workers in the hospitality industry to apply for permanent residency? Okay, so first of all, from whatever I have seen in the reports about the long-term shortage, I haven't seen hospitality as part of the occupations that is considered in shortage, or that is considered as a priority occupation. So I do not anticipate, at least, I mean, I don't know, first of all, but it's just about expectation and anticipation based on what kind of reports you see. So I don't anticipate to see any occupational specific draws within the hospitality industry, and certainly not for Tier 4 category. Now, I know Mark Miller had earlier announced that they were looking to bring in some programs with Tier 4, Tier 5 category. Now, as and when that will happen, or that may happen, the expectation is that they would still be revolving around specific trade and construction categories, or even healthcare for that matter. But at least I don't see anytime soon for hospitality to be included. Of course, I mean, you never know. IRCC can always do what they want to do, but at least as far as anticipation is concerned, I don't think that's happening anytime soon. Okay, what happens if someone creates multiple express entry profiles? You shouldn't be creating multiple express entry profiles. And if you receive invitation in one, now think about it, you are wasting very, very, very valuable invitation for somebody else. So please don't do that. Please do not create multiple express entry profiles. I know a lot of you are out there who do it anyways. Please bear in mind, IRCC has been very clear, and they have said that the creating multiple express entry profile is illegal. You shouldn't be doing it. And if you're doing it, then and as of right now, we haven't heard of any consequences as such. But this has already been brought up in several discussions by IRCC. They have even identified how many people are actually creating multiple express entry profile. At the last count, there were roughly 8,000
multiple express entry profiles, so more than one profile of individuals. They had already identified those. You wouldn't want to, get into a position or at a situation where this one gets pulled up, and that would not be a nice thing to happen for you. So, and of course, the whole point that if you get invited in your multiple profiles, then imagine how many invitations you're wasting, because somebody out there is losing out, and that somebody out there might be having their status expiring, or that might be their only chance. So please don't do that. Please don't create express entry profiles. I mean, don't create multiple profiles there. Okay, we're not doing any specific question as such. What else is there? If we have STEM category, what will be the cutoffs? There is absolutely no way to predict any cutoffs at all. Primarily because as far as category cutoffs are concerned. So, for example, I think, yeah, no, not this one. There was STEM category cutoffs. Yeah. Okay. Welcome back, Sahil. So, as far as STEM category cutoffs are concerned, no, there is absolutely no way that anybody can speculate, because we don't even know how many candidates are there in the pool in the STEM category. Now, the last draw, first it was 481, then it became 491. Can you imagine? So it went up by 10 points. And now that there has been a big gap, the last draw was in April in STEM. Whenever the STEM category draw will happen, I can assure you that there are tons and tons of people who have joined the express entry pool with the hope of getting with the invitation with the STEM category. And I think OINP Ontario also hasn't conducted a draw with the tech, because maybe they are waiting for IRCC to conduct their STEM so that they could then latch on to it and conduct their tech draw as well. So no, there is no way to speculate. Not only STEM, there is no way to speculate any kind of draw score for that matter. Okay, what else have we got? Can you put some light on RCIP? I think this one's interesting, Kubeir. Okay, RCIP, again, but for that matter, Sahil, Mark Miller had announced quite a few different programs throughout the year. There was RCIP. But again, you see, all these community-driven programs, either they are a French connection there, or you have to have a job offer in that specific community. Even we are expecting Atlantic AIP to, sorry, no, my bad, RNIP, Rural Northern Immigration, to reopen. They haven't announced when. It was supposed to be in fall. We are now already heading on, Rural Community Pilot Program. So no, it's not. So RNIP, RCIP are different. But again, yeah, but when RNIP will now come back, it is not going to be a pilot anymore. It is going to be a permanent program. So that is something which we're waiting. Again, they announced these programs are not easy to do. I mean, like, it's highly dependent on the community. Community recommendations can take, so although they display different information on the website, आप उनसे बात करेंगे जाके, things can become different. And then job offer is the main thing, and then community में रहना is the main thing. I think these are tougher programs to crack into. By and large, किसी के लिए भी as a target, ये programs becomes a bit difficult for them to, identify. They do. And not only that, there was a tier 4, tier 5 category program that Mark Miller said should be coming later this year. Again, no news on that. There is also no news on that child care and home support worker program, which he said that I think somewhere spring, that's what we are hearing within the fraternity. Somewhere spring of next year, it should be, around. But I think it's been announced for a long time. अभी तक इतना उसके अंदर delay, let's see. मुझे तो ये भी लगता है कि काफी सारे जो प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किए थे इनिशियली, वो शायद आए ही नहीं. वो मतलब they'll just get brushed away under the carpet with the current, because when these announcements were made, इतने हालात गर्म नहीं थे. अब तो जिस तरह के जो, हाँ, I think suddenly, अगर आप देखोगे ना, इस year के starting से they changed the course, but otherwise last year end तक तो they were pretty hopeful again. मतलब बहुत ज़्यादा नए programs, हर एक चीज़ की announcement हो रही थी, but then suddenly एकदम से तख्ता पलट. नहीं, I think ये last quarter of last year से ही शुरू हो गया था. That is the reason जो study permit के इतने सारे changes जो आए earlier this year, that's what you saw.
Or somebody says few provinces got incremental quota. Yeah, they got the incremental. Only Ontario got the incremental quota, quite a big one at that. But some Yeah. provinces actually had their quotas snipped away. For example, Alberta. So, अगर ये overall targets जो हैं, if they are going to be impacted, then I'm sure जो भी incremental quotas थे for each provinces, you will see reduction in those quotas as well Yeah. as we move forward. Yeah. एक और अभी इमिग्रेशन की तो बहुत बातें कर ली. Let's talk about Canadian life for a change that we have. The last 10-15 minutes that we have, उसमें बात करते हैं. नहीं, ये भी नहीं था. एक हमारे पास था. Somebody said something pretty interesting. This one. To be honest, Canada's economy will take at least 5 years to grow at the rate at what the people will feel comfortable. Immigrants, sure at their own behest, be fooled by the quality of life propaganda. Quality of life का propaganda जो है. Do you believe in the quality of life propaganda as far as Canadian immigration is concerned? The way agents, lawyers, consultants, uh, uh, Canadian colleges, institutions, Canadian government in a lot of ways than otherwise. Do you believe in this in this quality of life propaganda? See, I believe this question is filled with a lot of perspectives, right? I mean, like what quality of life for you will be very different than what I perceive as quality of life, and I'm sure differently. But I believe जो भी recently आया, Canada is ranked number 4 in the quality of life index, right? Which caused quite a lot of stir. I definitely think number 4 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, considering the ongoing the ongoing crisis here or the ongoing situation. But it's not bad either because see, every country has its own challenges, right? If you go to India, उनके अपने challenges है. There is a whole set of challenges altogether. Fight है, pollution and whatnot. यहाँ पे आओगे नए challenges हैं, status maintain करना and then inflation and all. But by and large, filled with perspective वाला answer है. I am pretty happy with my life here. That's what I can tell. Um, but yes, you have to come to the country. You have to enjoy the benefits that it has to offer. एंड देन यू कैन ओनली डिसाइड कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं लगी, है ना? मतलब लाइक आई सेड क्वालिटी ऑफ लाइफ. पेरेंट्स आते हैं कनाडा के अंदर, दे आर वॉकिंग डाउन द रोड, उनको रोड क्रॉसिंग इजीली मिल जाए, वो कहते हैं यार ये तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है तुम्हारी यहाँ पे. बट देन जब डॉलर्स में खर्च करने लगते हैं तो फिर कहते हैं ये तो महंगाई बहुत ज़्यादा है ना? तो पर्सपेक्टिव सो हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, बट बाय एंड लार्ज क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ गुड हियर. यार मैं इस वक्त दुबई में हूँ एंड आपको तो बहुत ही मेरे को तो अच्छी यहाँ है. पे बड़ा अच्छा, मेरे को तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे. आई मीन बहुत अच्छी विद लगी. इन विद इन 15 मिनट्स कुछ भी डिलीवर हो जाता है. खाना तो हाँ, खाने की तो बात ही नहीं कर रहे, बट एनी काइंड ऑफ ग्रोसरीज, एनी काइंड ऑफ आइटम्स यू नीड फ्रॉम द सुपरमार्केट 24/7 खाली मैसेज करो. समटाइम्स आई वंडर कि वो 15 मिनट में डिलीवर करते कैसे हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ये भी बहुत अच्छी है. तो फिर यहाँ के लोग कनाडा क्यों जाएं? फिर वो वहीं आ जाती है बात कि एज यू सेड पर्सपेक्टिव, राइट? इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय क्वालिटी ऑफ लाइफ. so और for some एंड आई people गॉट. like sorry, गो go अहेड, ahead. गो अहेड. तो दुबई से जो लोग मेरे पास आते हैं ना, मतलब जिन क्लाइंट से बात होती है, तो उनसे पूछता हूँ यार कि एंड दे हैव द सेम आंसर कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अब वी आर वेरी हैप्पी, वी हैव एवरीथिंग, कॉर्पोरेट ग्रोथ भी है। तो मैंने फिर आना ही क्यों है कनाडा? लाइक व्हाट इज़ इट दैट इज़ ड्राइविंग यू? कहते हैं हमारे पास एक परमानेंट पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास परमानेंट लाइफ नहीं है ना, वी डोंट हैव, मतलब यहाँ से कभी रैप अप हुआ तो वी विल हैव टू गो बैक। सी फॉर देम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी मेंटल पीस इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, राइट? सो उनके लिए जो माइंड में एजिटेशन है, दैट इज बिकॉज दे डोंट हैव अ परमानेंट स्टेटस, सो दैट कुड बी one reason. But what do you think is your take on the corporate life here? मतलब if somebody is working 9 to my 5, take my take on corporate life in Canada. yeah, is it Okay. worth for somebody 9 to 5 moving here versus a self-employed professional or a businessman moving here? Because both of them will have different See, aspects. it's really my pet peeve, if you want to call it, as far as Canadian immigration is concerned, that Canada, for some reason, just does not encourage entrepreneurship. They just do not encourage small businesses or people to set up their businesses. I mean, look at it. We don't even have a federal program which encourages business. तो अगर इस तरह से अगर आप businesses या small businesses को अगर आप encourage ही नहीं करोगे और कोई ऐसे pathway या programs भी नहीं बनाओगे, so you are already killing a very big category of people
who can have a big benefit for the Canadian economy and for the Canadian public. I mean, agar wo businesses create hote hain, so they will create jobs, right? At the end of the day, they will create jobs. They are paying taxes. Of course, they bring in more products, more services to the market, which again helps somehow bring the prices down as well. Competition create hota hai. But I see that reluctance within. And then if you bring it down to the corporate mindset, most people who are coming to Canada are also not not looking to do anything but looking for jobs. So the whole the whole focus is always trying to look for a job. And of course, I mean, not everybody is cut out to be an entrepreneur. I understand that, and most people would seek the safety jo net hota hai in terms of the job mindset. But then the taxation, as far as Canada is concerned, that really puts you back. I mean, somebody who's drawing a package of $100,000, you're not taking home Exactly. $100,000, You right? said You will be that probably correctly taking said. in the range of 60, 65, 70 के आसपास आप घर लेके जाओगे. And that sort of really shakes you up when it happens to you, especially at the first time. Now, two things. For example, if there are people who are coming from the Middle East, they're not used to being taxed. तो उनको tax होता ही नहीं है. And when they see their paychecks getting slashed by 30, 35, 40%, it's quite a big shock to them. India से काफी सारे जो लोग आते हैं, they obviously are used to seeing the tax if they're coming from corporate to corporate, this If thing. not that high, So yeah. it's not that. But again, when you're coming from the US, even if you're coming from the US, it's not the same. And even those get quite shocked with the way their paycheck turns out to be. Plus, the US dollar somehow takes you longer. The value of the US dollar in terms of if for example, you are working in the corporate setup in the US, one, you're getting paid better, you're getting taxed less, and your dollar has more value. I mean, look at it in that way, right? So that comparison will always be there. Uh, and I mean, somebody just, हाँ US is बोलिए a बोलिए. big brother in terms of jobs, kind of jobs, and the paycheck that it has to offer is always taking over. In terms of a race of corporate, I think US has definitely, or it has already been, leaps ahead. But again, you see, एक कहावत तो नहीं है. आई थिंक इट्स वेरी नाइस है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. सो यू Yeah, कैन नेवर हैव अ कंप्लीट solution. There is no perfect place on the face of the earth, because वो जो आपका जहान है ना, जो आपका मुकम्मल जहान, वो आपको खुद बनाना पड़ता है. You have to make your own heaven. So no matter where you go, no matter which circumstances you might be, no matter what is surrounding you, if you are not prepared to put in the effort, put in the work, and make things happen for you, you could be in the best place on earth, and you might still be struggling, or you might still not be happy with it. I guess that would be most appropriate. You are happy, right? You were also doing pretty decent in terms of your career options back in India. I have worked in a lot of companies in the beginning, but then I've been into businesses throughout after that. And for me, Canada has been extremely nurturing, has been very grounding, very humbling, and at the same point of time, something where I have thrived, where I have grown. So for me, Canada, I love it. And again, I cannot compare Canada with anything else, because आप कुछ किसी को compare कर ही नहीं सकते. You can हर जगह में, I mean, comparing Dubai and Canada is out of the question. There is no comparison at all. Dubai will have XYZ which works for it, and they will have ABC which absolutely doesn't work for it. Same way with Canada. So comparisons are not really makes sense. But for each person, what their expectation is. For example, आपके पास client आता है, भाई आप Canada आना चाहते क्यों? Why do you want to come to Canada? What is it that draws you to Canada? Is it peace of mind? Is it permanence? Is it uh, free healthcare? बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, but anyways, but it does make for it, right? At the end of the day, it is free. तुम चाहे whether you like it or not. Yes, you may have to wait a bit longer than required, but it is free at the end of the day. Uh, Education, children's education, you get the Canadian child care benefit, the old age pension, the employment insurance. Again, if you are willing to really prepare all those big business plans, then the banks are also pretty encouraging in terms of giving you out those business loans. There is plenty to sort of
take advantage of to progress and to grow yourself if you want to, or upskill it. But it all depends, आप individually किस तरह से देख रहे हो उसको. So, like 2 मिनट है तुम्हारे को, मैं 2 मिनट देता हूँ साहिल. ये 2 मिनट तो तुम्हारे से कोई भी नहीं छीन सकता. बताओ क्या कहना चाहते हो. जिंदगी का गवर्नमेंट नहीं कुछ नहीं आई थिंक यू वेरी राइट इन व्हाट यू मेंशनड ना मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता दैट मींस यू हैव टू चूज योर ओन फाइट आपको इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कनाडा और बीट एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर you need to list down your priorities and see what Canada has to offer. Say, if high return on investment or high money is your choose, then maybe you want to look away. But अगर आपको एक थोड़ा settled and थोड़ा laid back, थोड़ा humble approach चाहिए, then this could be it. But you have to lay down your priorities, see what suits you the best, and see what Canada has to offer. एंड अपने चैलेंजेस का बनाओ कि कनाडा में रहे तो क्या चैलेंजेस हैं एंड इंडिया में रहे तो क्या चैलेंजेस है दुबई में रहे तो क्या चैलेंजेस है सी व्हिच फाइट यू पिक अप है ना हर जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं तो जस्ट सी व्हाट फाइट यू वांट एंड गो अहेड विद इट इसी के साथ आज का हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं. दिस इज मी कुबेर एंड देन दैट्स साहिल. हमने ये शुरू किया है नया पॉडकास्ट. वी वुड लाइक योर व्यूज, योर ओपिनियंस. प्लीज अपने पोस्ट करें नीचे, कमेंट्स में बताएं what would you like for us to discuss, what would you like for us to discuss more, what would you like us to include, because this is going to be a regular weekly session. फिलहाल तो हम virtually कर रहे हैं, but again when I'm back in Canada I think we will be meeting personally and doing this in person as well. Eventually as we progress we will try and get more people as guests on the podcast as well. Hopefully we will be able to get some very interesting ones that we have in mind. But at this point of time, it would be really, really nice if you could share your opinions, your views as to what you would like to see in this podcast with me and Sahil hosting it, because this is the Canadian immigration blueprint, and that's how we would like to do it. Thanks everybody for joining in, and thanks for your lovely comments. I know this time we did not get a lot of time to answer, but yes, this is just the beginning, as Kubeir said. So beginnings are always good, and more to come in the future. जैसे आते रहेंगे, and let us know what you'd like to hear from us, and do good beginnings. Thank you, and good night from my side. And I think Sahil, have a good day for you. Good day from my side. Thanks, guys.